दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों, जो मैंने आपको पहले वीडियो दिया कि 1000 निफ्टी 20 को प्लेज करके आप कैसे एक ओटीएम कॉल को भेज सकते हैं। दोस्तों, इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सूचना है और चेंज भी है जो आपको अपनी स्ट्रैटेजी में करना पड़ेगा। उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे दो व्यूअर हैं, मोहित मिश्रिल और रंजीत कुमार। इन्होंने एक जानकारी दी है कि जब हम कोई ओटीएम कॉल को राइट करते हैं तो उसका, या हम किसी भी कॉल को या पुट को राइट करते हैं तो उसका जो मार्जिन होता है उसमें से 50% मार्जिन कैश में हमारे अकाउंट में होना चाहिए। बाकी 50% हम कोलेट्रल से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी की लाइट में हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिसकी हमने बात करी थी कि 2 लाख होगा, वो दोस्तों फिर 2 लाख नहीं होके थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज़ आपने निफ्टी 20 खरीदी 154 रुपये में, 1000 निफ्टी 20 आपने खरीदी 1,54,000 रुपये में, तो आपका 1,54,000 रुपया निफ्टी 20 को खरीदने में लग गया। अब दोस्तों, उसको प्लेज करके जो आपको मार्जिन मिलती है, उस मार्जिन पे, वो मार्जिन समझिए आपको 1,45 या 1,50 के आसपास हेयर कट करने के बाद में आपको मिलती है। तो जब आप एक ओटीएम कॉल को बेचने जाएंगे तो आपको आज की जो वॉलेटिलिटी है उसमें एक कॉल को सेल करने की मार्जिन करीब 1,56,000 रुपया, 1,50 से 1,56, अलग अलग ब्रोकर्स पे डिपेंड करता है, वो आपको लगती है। मैं 1 मिनट के लिए मानता हूँ कि 1,50,000 भी लगती हो, तो राउंड फिगर में 75,000 रुपया कैश आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए और 75,000 रुपया आप कोलेट्रल यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी में क्या चेंज हमको करना चाहिए? चेंज हमको ये करना पड़ेगा कि 1,54,000 रुपया हमारा निफ्टी 20 में लगेगा, 75,000 रुपया हमको कैश अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा। ये दोनों अमाउंट को अगर हम जोड़ें तो ये हो जाता है आपको 2,29,000 रुपया, और करीब 21,000 रुपया मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एमटीएम को मेंटेन करने के लिए भी, क्योंकि आपकी ओवरनाइट पोजीशन रहती है, तो अगर थोड़ा बहुत मार्जिन रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए आप 21,000 रुपया रख सकते हैं। यानी दोस्तों, जो 2 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट की हमने बात की थी वो अब बढ़कर 2,50,000 रुपया हो जाता है। तो दोस्तों, एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप निफ्टी 20 को प्लेज करके 75,000 रुपया उसमें से यूज़ करें और टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो 2,50,000 रुपया होगा। 2,50,000 रुपया के ऊपर आप कॉल को बेचकर जो भी प्रीमियम कमाते हैं, जो भी प्रीमियम आपको मिलता है, उसको आप निफ्टी 20 में, जब जब निफ्टी 20 निचले स्तर पे जाए तो उसको वहाँ इन्वेस्ट करते जाइए। वो इन्वेस्टमेंट आपको बाद में अच्छा रिटर्न देगा। दूसरी स्ट्रेटजी दोस्तों इसी में क्या हो सकती है, अगर आप थोड़ा सा पैसा और लगाएं, वो स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आप निफ्टी 20 को प्लेज करके, आपको मान लीजिए 1,50,000 के आसपास आपको कोलेट्रल मिलती है, तो आप 1,50,000 रुपया अपने अकाउंट में रखें और साथ में 25 से 30,000 रुपया एमटीएम मार्जिन को मेंटेन करने के लिए रखें। यानी आप दोस्तों अगर 3,30,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हर हफ्ते
2 लॉट OTM कॉल की सेल कर सकते हैं, तो उस तरह आपका प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा। जब आप 2 OTM कॉल को सेल करते हैं दोस्तों, तो ये ध्यान रखें कि पहली OTM कॉल आप फ्राइडे को, कुछ दोस्तों की ये भी क्वेरी थी कि OTM की जो कॉल है वो हमको कब सेल करनी चाहिए। तो दोस्तों आइडियली जब आप OTM की कॉल को सेल करेंगे तो आपको फ्राइडे को पहली 4-15 मिनट की कैंडल देखने के बाद आपको OTM की कॉल, जो 350 पॉइंट ऊपर की कॉल होती है, आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि फ्राइडे की ओपनिंग आपको पहले देखनी है। सपोज निफ्टी ओपन हुआ 14,600 पे, तो आपको पहले तो ये समझ लेना है कि आपको 14,950 की कॉल को ही राइट करना है। अब 14,950 की कॉल को आप पहली 4-15 मिनट की कैंडल बनने दीजिए। अगर पहली 4 कैंडल्स एक दूसरे, पहला जो कैंडल बनती है 15 मिनट की, उसमें जो निफ्टी का हाई होता है, अगर बाकी 3 कैंडल उस हाई को से तोड़ के ऊपर की तरफ जाती है, तो दोस्तों आप थोड़ी देर और इंतज़ार करके अच्छा प्रीमियम 350 पॉइंट OTM कॉल के ऊपर आप कलेक्ट कर सकते हो। ये तो हुआ पहली लॉट खरीदने के लिए। जो दोस्त एक लॉट पे ही काम करना चाहते हैं, वो 2.5 लाख रुपया लगाएं, 2.5 लाख। माय फ्रेंड्स हु वांट टू प्लेस 1000 निफ्टी बीज have to invest 2.5 lakh, because whatever OTM call you are selling, you need to keep 50% of the premium in cash, which means if you have bought Nifty Bees at 1,54,000, you need to keep another 75,000 as cash for selling the OTM call. Balance 75,000 can be taken by pledging the Nifty Bees, and another 25,000 should be kept in your account to maintain the MTM margin requirement, as because your position is a position which is overnight. So friends, and within this, another strategy can be that you buy 1000 Nifty Bees, get a collateral of 1,50,000, invest another 1,50,000 in cash, and keep around 25 to 30,000 or maybe 50,000 as MTM margin requirement. So you need to invest 3.5 lakh rupees, in which you are purchasing 1000 units of Nifty Bees and you are selling 2 lots of OTM call, which is 350 points away every week. So your profit gets doubled, and as and when the Nifty moves downward, you can purchase Nifty Bees from that premium which you have earned, so that for a long term you are investing in Nifty Bees at a lower average price. So friends, I am extremely thankful to 2 of my viewers who have indicated this. So I am coming out with this information for the benefit of all my friends who are getting into this strategy. So friends, initially we had talked of investing 2 lakhs to sell one OTM call, which is 350 points away. Now we are discussing an investment of not 2 lakhs, 2.5 lakhs,
for selling one OTM call every week. And for friends who want a slightly better strategy with a slightly higher investment, the strategy is to sell 1000 to buy 1000 Nifty Bs, place them and add 2 lakh rupees to your account, of which 1.5 lakh rupees will be used to sell 2 OTM calls which are 350 points away, and 50,000 can be kept as a MTM, margin requirement money. So you can either invest 2.5 lakh rupees and sell one OTM call, or you can invest 3.5 lakh rupees and sell 2 OTM calls every week. When you sell one OTM call, then you should sell that OTM call only after 10:15 a.m. every Friday. And at 10:15 a.m., if you observe the market is bullish, then you can wait another half an hour to get the same call at a higher premium. Remember friends, the opening price of Nifty on Friday should be taken as a benchmark, and you should be selling 350 points out of the money call, which means on a Friday morning, if the Nifty opens at 14,600, your target should be to sell the call which is out of money 350 points, which is 14,950 call for that particular week. Now you should sell this call only after 10:15 a.m. And 10:15 a.m., if you realize the market is bullish and going up, then you can wait for another few minutes so that you can collect an even better premium for the same call which you are selling. For friends who want to invest 3.5 lakh rupees and can sell 2 OTM calls, can sell one OTM call after 10:15, and if the market is extremely bullish, they can sell the next OTM call maybe after 1 or 2 hours at an even higher premium, so that average premium collected for the 2 calls is even higher, so your profits will also be higher if Nifty fails to cross 14,950. This is clear cut the whole strategy. Now friends, in case you have bought 14,950, you have sold 14,950 call on Monday. Say the market drops by 300 points on Tuesday. What do? Your call would anyway be in huge profit because Nifty has already fallen 300 points, which means you had taken a 14,950 call at around 14,650 or 600. Now that the Nifty has fallen 14 to 14,300, you should book your profits in 14,950 calls and take another position which is 150 points lower, which is 14,800 call. Friends, understand it very properly. It's very important, otherwise you may incur losses. So when the market falls by 300 points, your call which you have sold for 14,950 would reach 5 to 7 rupees. Now friends, if you exit from that call at 5 to 7 rupees,
and sell a call which is 150 points lower, not 300 points lower. Market has fallen 300 points lower, but you would sell a call which is 150 point lower, which is around 14,800 call, which would probably be at around 15 rupees or so, or maybe 16-17 rupees. So when you shift to the lower call set, you are able to earn another 7-8 rupees premium on one call and 16 rupees premium on two calls if you are selling two calls. So that is an additional benefit which you can get in case of a sudden downside. Now friend, what happens if there is a sudden upside? Friends, remember one thing, unless there is an event, there cannot be an upside of 300 points in a day in Nifty. Only on the days when there are events, you should try and refrain from using this strategy in a week where there is a major event like budget, election results, Fed meeting, or RBI meeting. Because on these events, the market can actually rocket 300 points in a day also. Other than that, it is highly unlikely that Nifty would scale 300 points in a day. So friends, when you are selling a 350 points out of the money call, unless there is an event, you are in safe domain. Only thing which can happen is Nifty can fall 300 points on a bad news, which it can fall any day. So when it falls, you should immediately change your strategy, book your profits in the existing 14,950 call and get into a call which is 150 point lower, which is 14,800 call. But you are only coming down by 150 points in selling a call while the market has fallen 300 points. Remember that. So for the market to even scale 14,800 after falling to 14,300 in 3 days time or 2 days time is almost impossible. I would never say it is impossible because market is a place full of uncertainties. Nobody can guarantee that it cannot happen, something cannot happen. But it is highly unlikely that the Nifty would be able to reach 14,800 also after falling to 14,300 for that week. So friends, I have clarified the strategy. Now there are two strategies which you can adopt. One strategy is to invest 2.5 lakhs, buy 1000 units of Nifty Bs and sell one OTM call, or invest 3.5 lakh, buy 1000 units of Nifty Bs and sell two OTM calls. Hope friends I have been able to clarify the strategy once again. And remember, the OTM call which you are selling, you should sell on a Friday after 10:15 am, and if you find there is a bullish momentum at 10:15 am, you should wait for another 15-20 minutes and then sell the call and collect even higher premium. Friends, if you like my video, please share it with your friends, share the strategy with them so that they can also invest and gain over a longer period.
Friends, one more thing, whatever premium you are gaining every week, you should plow it back when the Nifty falls by 100, 200, 300, 500 points. Whatever is the fall, you should keep averaging Nifty Bs at a lower price with the money which you are earning by selling the OTM call. Friends, unless you require that money in a short medium term, you should keep plowing back that money into Nifty Bs by averaging Nifty Bs at lower prices so that your long term gain on Nifty Bs is also very attractive. Thank you very much, friends, for watching the video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Good night.